Bell sound. To make a solid punch, open your hand, roll your fingers inwards, and lock the punch using the thumb. To take the forward guard stance, bring forward your right foot, keeping a distance of 16 to 20 inches and rotate the feet about 45 degrees. Then bring the front and back hands upwards. For the outer block, lean backwards, raising your front foot, and then perform the block using the front arm. Here are some points to remember. The backside of the arm will be used for the contact. The shoulder must move in the arc to avoid an injury. The front heel must be raised to about 70 degrees. For the inward block, lean backwards, raising your front foot, and then perform the block using the front arm. Here are some points to remember. The front side of the arm will be used for the contact. The waist should be twisted. The front heel must be raised to about 70 degrees. Repeat this with the other hand. For the low block, lean backwards, raising your front foot, and then perform the block using the front arm. Here are some points to remember. The back side of the arm will be used for the contact. The waist should be twisted. The front heel must be raised to about 70 degrees. Repeat with the other hand. For the rear inward punch, raise the heel of the back leg and punch straight using the rear hand fist, shifting the body weight onto the front leg. Here are some points to remember. The back heel must be raised to about 70 degrees. The waist should be twisted. The momentum of the body should shift forward while punching. Repeat with the other hand. The rear inward punch can be applied onto the opponent's abdomen, neck, and jaw. For the front inward punch, raise the heel of the back leg and punch straight using the front hand fist, shifting the body weight onto the front leg. Here are some points to remember. The rear heel must be raised to about 70 degrees. The waist should be twisted. The momentum of the body should shift forwards while punching. Repeat this with the other hand.
For the front leg front kick, raise the front leg, shifting the weight onto the back leg, and then kick straight, using the force through the back leg. Here are some points to remember. The heel of the back leg must be raised to an angle of 90 degrees. The point of contact must be the ball of the feet and not the toe region. Repeat with the other leg. For the rear leg front kick, raise the back leg, shifting the weight onto the front leg, and then kick straight using the momentum and shifting the weight forward. Repeat with the other leg. Similar to the previous kick, the heel would be raised to around 90 degrees, and the point of contact would be the ball of the feet. The white belt pattern contains an outer block, followed by rear and then front inward punch. The first combination of white belt consists of an outer block, followed by the rear and then front inward punch. The defense drill of the white belt consists of an outer block, followed by rear and front inward punch. The second defense drill of the white belt consists of inward block, followed by rear and front inward punch. The third defense drill of the white belt consists of a low block, followed by rear and front inward punch. The fourth defense drill of the white belt consists of an outer block, followed by rear and front inward punch. For the rear knee strike, shift your weight on the front foot and strike with the back knee moving forwards. Here are some points to remember. The body has to be balanced on the ball of the front foot. Repeat with the other knee.
For the stepping front kick, take a step forward, shift the weight on the back leg, and kick using the front feet. For the side fist strike, shift your weight on the front foot and strike using the side of the fist in a circular motion. Here are some points to remember. The side portion of the fist has to be used as the striking point. The rear heel has to be inclined at an angle of around 70 degrees. Repeat with the other hand. For the back fist strike, shift your weight on the front foot and strike using the back of the fist in a circular motion. Here are some points to remember. The back portion of the fist has to be used as the striking point. The rear heel has to be inclined at an angle of 70 degrees. Repeat with the other hand. For the knife strike, shift your weight on the front foot and strike using the hand like a knife in a circular motion. Here are some points to remember. The side portion of the hand has to be used as the striking point. The rear heel has to be inclined at an angle of around 70 degrees. Repeat with the other hand. The fist and hand strikes can be used on the abdomen, neck, and jaw.
The pattern of the white senior belt consists of an outer block followed by rear inward punch. To end the pattern, the rear inward punch is followed by a front inward punch. The pattern has to be repeated in all four directions. The combination of the white senior belt consists of rear leg front kick followed by rear and front inward punch, which are then followed by a knee strike and finished with a front and rear inward punch. This is repeated from both sides. The defense drill of the white senior belt consists of inward, then outward, and then a lower block, which are then followed by outer, inner, and low block. For the front leg side kick, position yourself sideways. Shift your body weight on the back foot, bend the knee inwards, and then kick sideways, balancing yourself on the back foot. Here are some points to remember. The body has to be balanced on the ball of the back foot. Repeat with the other leg. For the stepping side kick, position yourself sideways and take a step forward. Then repeat the same as in front leg side kick. For the rear round punch, bend forwards and punch using the rear hand in a circular motion.
Here are some points to remember. The rear heel must be inclined at an angle of around 70 degrees. Repeat using the other hand. For the dodge, bend downwards and then backwards, creating an arc. Repeat the same in the opposite direction. The dodge can be followed with rear and front round punch. The combination of yellow belt consists of front leg side kick followed by back fist strike and then a rear and front inward punch, which are then followed by a knee strike and finished with a front leg side kick. The pattern of yellow belt consists of outer block followed by front leg front kick and then front and rear inward punch, followed by a dodge and finished with a rear inward punch. The speed drill of the yellow belt consists of front and rear inward punch, followed by a dodge, and then finished by a front leg front kick. Repeat the speed drill from the other side. The first defense drill of the yellow belt consists of inward,
then outer block, followed by lower block, and then 2 inward and 1 lower block. The second defense drill of the yellow belt consists of outer block, followed by a front leg front kick, then front and rear round punch, followed by a dodge, and then finished by a rear round punch. The third defense drill of the yellow belt consists of front and rear round punch, followed by a dodge, rear round punch, and finished by a front leg front kick. For the rear leg side kick, shift your weight on the front foot and kick with the rear leg, balancing yourself on the front foot. Balance your body using the ball of the front foot. For the front round punch, shift your weight on the front foot and punch using the front hand in a circular motion. Here are some points to remember. Both the heels must be inclined at an angle of 70 degrees. The waist must follow the rotational movement. The combination of the yellow senior belt consists of front leg side kick, followed by a back fist strike and rear inward punch, and then followed by a front leg front kick and finish with a front and rear inward punch. Repeat the same from the other side. The pattern of the yellow senior belt consists of an outer block followed by a front leg front kick and front and rear inward punches, finished by a dodge and a rear inward punch. Repeat the same in all 4 directions.
The speed drill of yellow senior belt consists of two front inward punches, then a dodge followed by a front and rear punch, and is finished using a rear leg front kick. The first defense drill of yellow senior belt consists of lower block, outer block, and then lower block. The second defense drill consists of two round punches followed by a dodge, then a front and rear round punch followed by a rear leg front kick. Here are some uses of Choi Kondo in close range. If someone holds or tries to grab you from the front, you can strike using your knee in the groin, which loosens. If someone tries to punch you, block using the outer block and apply a rear round punch in the jaw, then a knee strike in the abdomen and take down the opponent and punch in the jaw.
If someone tries to grab you, you can apply a punch in the jaw, which loosens the grip of the opponent. Then apply an elbow strike in the chest. And then apply a front leg side kick. हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है मास्टर बिक्रम थापा, 6th की ब्लैक बेल्ट फ्रॉम चोयकोंडो। सो मैं आज आपको कुछ सेल्फ डिफेंस टिप्स बताने वाला हूं, जो कि बड़े इजी आसान तरीके से कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। हम लोग बहुत डिफ़िकल्ट मूव नहीं बताएंगे, और आसान जो टेक्निक है जो हम डेली रूटीन में और किसी भी सिचुएशन में हो तो हम अपना डिफेंस कर सकें, इस तरह का मूव मैं बताने वाला हूँ। अब मैं बताऊंगा कि अगर कोई आपका नेक पकड़े तो आपने कैसे डिफेंस करना है। ये अगर कोई इस तरह से आपका नेक पकड़े तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ड्राइंग पे, फिर ये पाम्स आपने नेक पे मारना है। सो ये सबसे आसान तरीका है, इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगता। सो मैं आपको दोबारा करके दिखा रहा हूँ। हियर बूम एंड बूम। अब मैं बताऊंगा कि अगर कोई आपके नेक पकड़ के नीचे गिराने की कोशिश करे, उस सिचुएशन में आप अपना डिफेंस कैसे करें। ये आप नीचे चले गए, नीचे जाते आपने नी जमीन पे लगाया और आपका ये जो हाथ है फ्री है, तो आपने पंच ग्राइंड पे मारना है। जब आप ग्राइंड पे मारेंगे तो इनका पकड़ जो है ढीला हो जाएगा। तो जैसे पकड़ ढीला हुआ तो आपने ये जो पाम्स है चीन पे मारना है। अब मैं बताऊंगा आपको कि अगर कोई पीछे से आपको पकड़े तो कैसे आपने डिफेंस करना है। ये आपके हाथ भी आपका पकड़ा हुआ है तो आपको मूव करने का नहीं है। सो आपको ये पैर उठा के आपने टो पे मारना है, और जैसे आप टो पे मारेंगे तो इनका ग्रैप ऑटोमेटिकली थोड़ा लूज हो जाएगा। और आपने हिप और हाथ को दोनों उठाना है, हिप से पीछे को मारना है और हाथ को ऊपर की तरफ उठाना है। ये मोशन आ गया, ये मोशन जैसे आएगा, ये अपने एल्बो से स्टमक पे मारा, देन किक। अब मैं आपको बताऊंगा कि की को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो एज ए वेपन। अगर किसी ने आपको पकड़ लिया और आपके हाथ में की है, स्कूटर का, कार या किसी चीज़ का भी की है, तो जैसे ये पकड़ा है तो आपने क्या करना है, इस की को आपने नेक पे मारना है। सो उसके बाद आप किक मार सकते हो, ग्राइंड पे कुछ भी कर सकते हो। अब मैं बताऊंगा कि अगर आपके हाथ में मोबाइल है तो मोबाइल से अपना सेफ्टी कैसे कर सकते हैं। जैसे कि किसी ने पकड़ लिया आपको आगे से, तो आप मोबाइल आप नेक पे मार सकते हो और हेड पे मार सकते हो। अब मैं बताऊंगा कि अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हो और आप बैठे हो, सो कोई आपको एक टीजिंग करता है, सो इस तरह से कोई वो करे, तो आपको क्या करना है, आपको ये एल्बो यहाँ से उठाना है एंड यहाँ पर नेक पे मारना है। अब मैं बताऊंगा, जैसे कि मैंने पहली टेक्निक बताया था कि आप एल्बो मार सकते हो, उसी में मैं दूसरा टेक्निक बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हैं। जैसे इस तरह से टच करें, आपने क्या किया, आपने इसको पकड़ा, इसको इस तरह से घुमाया, जैसे आप इसको ट्विस्ट करेंगे ये नीचे आ जाएगा। ये आपके कंट्रोल में है, आप किक मार सकते हैं, पंच मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको कोई हाथ पकड़ के आपको खींचने की कोशिश करे या किडनैप करने की कोशिश करे, तो उस सिचुएशन में आपने क्या करना है, जैसे ये खींच रहे हैं, अपनी वेट जो है पिछले वाला पैर में डालना है। आपने भी अपने आप को पीछे की तरफ खींचना है। जैसे आपने थोड़ा सा वेट आपने ये डाला, उसके बाद वेट आगे डाला और पीछे वाले पैर से किक मारनी है ग्राइंड पे। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके कोई कॉलर पकड़ के स्लैप करने की कोशिश करे तो उसमें उस सिचुएशन में आपने कैसे डिफेंस करना है। आप ये देखेंगे कि जैसे कॉलर पकड़ा, स्लैप आई, तो आपने इस तरह से ब्लॉक किया, ये हाथ आपने यहाँ से उठाया, ये ब्लॉक किया और पाम्स आपने मार सकते हैं और ग्राइंड पे क्लिक कर देंगे।
अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर पीछे से पकड़े और आपका मुंह बंद किया तो आपने कैसे डिफेंस करना है। अब इसको मैं दोबारा से फिर बताने चाहूँगा कि जैसे इन्होंने पकड़ा तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ये अपना एल्बो चेस्ट पे मारा और स्टमक पे, फिर नी।